In previous video, we discussed about the binomial nomenclature system and what are the rules which are used in that particular system of nomenclature. In this video, we will discuss about the taxonomical categories. We will start from the very basic level, that is the unit of classification, which is species. First, we should write the hierarchical system, which is kingdom, then phylum, class, order, family, genus, and the species. Okay, so we are starting from this species. The species is nothing but the unit of classification. Some means if you want to classify the organism, the basic step you have to start it from the species. What is the species name of that particular organism? So that's why it is called as the unit of classification. And here the most closely related organisms are comprised to form a species. The first scientist who give the term species is no one but the John Ray. The John Ray first given the term. Okay, but the biological species concept, the biological species concept was given by Ernest Mayr. Ernest Mayr. Okay, Ernest Mayr जे कि definition of the species तमे कहि परिबो, but the definition is called as biological species concept. ताकू देइथिले Ernest Mayr. कौन से कहिले who is a species? What is the definition of a species? The species are group of closely related organisms which can interbreed naturally to produce fertile offspring. Okay, there are many things which is present in this species concept. Okay, first se kahile the species are nothing but the group of closely related organism. He did not say the group of related organism. He said that group of closely related organism. What does that mean? What signifies that closely related organism? The closely related organism means simply they have same ancestors. They have same ancestor. Because if organism have a relationship, that means they are belong to a same ancestor. मु आ मो भाई आमे बहुत close related. काहे कि हमर बापा माँ एका, मु आउ सपोज मो cousin आमो भीतर भी किछि similarity देखा जाए. Why? Because somehow our ancestor is same. So जेतबेले भी तमे रिलेशन देखुछ से रिलेशन भितर दी जण ऑर्गेनिज्म दीटा ऑर्गेनिज्म भितर किछि सिमिलरिटीज अछि, दैट मींस इट इज इंडिकेटेड दैट दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर. यदि बहुत सिमिलरिटी अछि, दैट मीन जस्ट बिफोर एनी बिफोर सम जनरेशन देयर एंसेस्टर वर सेम. यदि बहुत अधिक डिस्टेंस रे सेमानक भितर रिलेशन देखा जाउछि और सिमिलरिटी देखा जाउछि, ता माने सेमानक एंसेस्टर बहुत फार्दर जनरेशन पूर्वरु थिला. But जदि similarity अच्छी, that means it is clearly indicated that they have a common ancestor. ता माने Ernest Mayr एटा कहिबा को चाहिए आमे species काहा को कहिबा ना जो मानकर ancestor same थिबे, जो मानकर पूर्वज सेम थिबे. देन से कहले द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इंटरब्रीड, से मानक भितर ब्रीडिंग ही पारथिबा नेचुरली, एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ब्रीडिंग? आफ्टर द इंटरब्रीडिंग दे कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. से माने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तयारी करि परथे, द ऑफस्प्रिंग व्हिच हैज द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अगेन.
तो से ऑफस्प्रिंग जेतबेले एडल्ट हबो सी भी रिप्रोड्यूस करि पारुथिबो सेतबेले ही आमे ताको स्पीसीज बोली कहिबा बहुत बढ़िया डेफिनेशन से देइथिले बट देयर आर सम एक्सेप्शन व्हाट आर दोज एक्सेप्शन वी विल डिस्कस अबाउट दैट एक्सेप्शन ओके exception what are the exception there are some species which do not obey this rule किए सीए जेमिति कि म्यूल आमे म्यूल गोटे कहिथिले ना म्यूल किए म्यूल होची इट इज ए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन दीटा अलग अलग स्पीसीज का भीतर इंटरब्रीडिंग हैला जोटा कि से कहिथिले हबो नाही तमे केवल क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म भीतर इंटरब्रीड हबो आ से माने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तयारी करिवे एठी कोन हला दीटा एते क्लोजली नुह समहाउ क्लोजली बट नॉट सो मच क्लोज रिलेटेड बट तांको भीतर दीटा अलग अलग स्पीसीज भीतर इंटरब्रीडिंग हला जोटा कि से कहितले जे नाही सेमिति हबनी केवल गोटे स्पीसीज भीतर इंटरब्रीडिंग हेई पारिबो तो फर्स्ट रूल टा खारिज हेई गला नल एंड वॉइड हो गला तो म्यूल कहा कहा भीतर एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन है कि तैयारी होचंती ना मेल डोंकी प्लस फीमेल हॉर्स जदि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स भीतर हाइब्रिडाइजेशन हबो से माने जो ऑफस्प्रिंग ता देबे ताको तमे म्यूल कहबो ओके आउ गोटे सेमते स्पीसीज अछि जे होची हिनी कोन जस्ट अ रिवर्स टा जदि मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी हबो then they will produce the hinny and more interestingly they both are sterile से कौन कहले फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तयारी हो एमाने स्टेराइल हेले कोन एमाने ताले म्यूल मानु कोन स्पीसीज को आजिबनी कोन हिनी ग्रुप को स्पीसीज को ऑब्वियसली दे आर बिलोंग टू ए सेम स्पीसीज बट डेफिनेशन ता सेठी मैच करू नाही जहा को हमें स्पीसीज बोली कहले जमान को भीतर इंटरब्रीड हेई परिबो से माने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तयारी करि परिबे सेटा एठी शो हेई पारु नाही बुझेला क्लियर आउ गोटे कोन आउ गोटे मानी भी liger what is liger that is male lion but female tiger okay ठीक सेम थी आउ गोटे ऑर्गेनिज्म आसीबो टाइगन जोटी कोन हबो मेल टाइगर प्लस फीमेल लायन एंड इंटरेस्टिंगली लाइगर भी होची फर्टाइल टाइगन भी होची फर्टाइल क्लियर ये दी जण स्टेराइल हेले ये दी जण किंतु फर्टाइल हेले माने डेफिनेशन रो अधा एठी काम कला फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तयारी कले कि जो दी जण के भीतर हाइब्रिडाइजेशन हेची ब्रीडिंग हेची से माने इंटर स्पेसिफिक दीटा अलग अलग स्पीसीज भीतर ब्रीडिंग हैला एंड से माने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तयारी कले सो दिस इज द एक्सेप्शन टू द स्पीसीज व्हिच इज स्पीसीज कांसेप्ट which is given by the Ernest Mayr and से कहले interbreed हबो naturally interbreed means sexual reproduction but there are thousands of organism unicellular organism तुम प्रोटिस्टा को नहीं जाओ मोनेरान्स मानन को नहीं जाओ they don't have the property of sexual reproduction तो यदि sexual reproduction करूनांती breeding करूनांती ता माने कोन तांको species under रे रखा जिवो नहीं obviously रखा जिवो तो सेटा थिला drawbacks of the Ernest Mayr biological species concept बुझियला तो जदी हमें species काहा को बुझिया चेष्टा करिबा suppose I have if I give you some examples then let's take the example of Homo sapiens Mangifera indica suppose the Panthera leo here the sapiens is the species indica is the species and the leo is the species Homo magnifera panthera are the genus बुझेला what is the species so in this video we discussed about the species the biological species concept and the exception to that biological species concept in next video we will discuss rest of the taxonomical categories and their examples thank you